Hello, hello, hello. Is the voice clear, guys? Please give me confirmation in the chat box so that we can start our legal class. Type C in the chat box if the sound is clear. Okay, great. All right. Okay, guys, get ready for the legal dictation. Okay. So, before starting legal dictation, let me tell you something. बहुत ही कम कोर्ट्स हैं जहां पर आपको लीगल डिक्टेशन ना पूछकर डायरेक्टली जनरल मैटर पूछे जाता है. ये पहले होता था, लेकिन राइट नाउ वी आर ऑब्जर्विंग अ ट्रेंड विच इज़ इन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स दे आर आस्किंग less of legal matter and more of other types of matters. Now these other types of matter consist of your KC type matter, your general type matter, your story type matter. ये सब पूछा जा रहा है, ठीक है. बट यू नेवर नो कि कब आपका पैटर्न चेंज हो जाए, कब आपको कहाँ पर क्या पूछा जाए. सो माई एडवाइस टू द लीगल स्टेनोग्राफर्स, एंड दिस एडवाइस इज कमिंग फ्रॉम माई सिलेक्टेड स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, कोई अलग अलग कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहे हैं. सो द एडवाइस इज, अगर आप कोई भी कोर्ट एग्जाम देने जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी कोर्ट एग्जाम, हाई कोर्ट, XYZ, सुप्रीम कोर्ट, जो भी है, तो यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ लीगल डिक्टेशंस. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऑफ लीगल डिक्टेशन में एकदम प्रोफेशनल प्रो लेवल पे हो जाओ, लेकिन यू शुड हैव सम नॉलेज. बाकी आप थोड़ा सा उस एग्ज़ाम के, उस कोर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को थोड़ा एनालाइज कीजिए, थोड़ा पता कीजिए कैसे मैटर्स आते हैं और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट गाइज द लीगल डिक्टेशन. गेट रेडी, डिक्टेशन स्टार्ट्स इन 5 seconds. Steno School Legal Dictation. 3, 2, 1, start. In view of the above observation made, it is amply clear that even though the accused had tortured and harassed the deceased, because of which she was constantly running away from her matrimonial home, and has also filed a number of complaints against the accused, the same cannot be said to be the reason for her death in the light of the fact and circumstances of the present case and the dying declaration made by her. The learned counsel for the appellants has placed reliance upon the decision of this court reported in the case of Ramesh Kumar versus State of Chhattisgarh bracket 2014 volume 9 SCC 491, wherein it is held that sections 49A and 306 IPC are independent and constitute different offences merely because an accused has been held liable to be punished under section 498A IPC. It does not follow that on the same evidence he must also and necessarily be held guilty of having abetted the commission of suicide by the women concerned under section 306 IPC. Therefore, the conviction and sentence for offence punishable under section 306 read with section 114 of the IPC of the present appellants is contrary to the legal evidence on record, particularly the dying declaration of the deceased
and the conduct of the accused who took the deceased to the hospital. This fact has been grossly ignored by the courts below while convicting and sentencing the appellants for the aforesaid offence. After evaluation of evidence on record and concurrent finding of fact recorded by the trial court and the appellate court, the appellants were convicted for the offences punishable under section 498A and 306 read with section 114 of the IPC. The accused were acquitted for the offences punishable under section 304B with section 114 of IPC and section 4 of the Dowry Prohibition Act 1961, as they did not find any evidence on record to bring home the guilt of appellants for the offences punishable under section 306, as there is no cogent evidence in this regard in the finding of the fact. Therefore, the conviction and sentence for the offence punishable under section 498A of IPC with regard to cruelty is held to be proved by the courts below. The same is accepted by us, and they are required to be convicted and sentenced for the offence punishable under section 498A IPC. The conviction and sentence passed by the High Court for the offence punishable under section 306 read with section 114 of IPC is liable to be set aside, and accordingly we set aside the same, since we have upheld the conviction for the offence punishable under section 498A IPC. It is to be carefully examined by us, taking into consideration the facts and circumstances of the case as to what sentence is required to be imposed upon the appellants. Full stop. Alright, so how was your percentage of attempt guys? कितना परसेंटेज इस मैटर का आप लोग ने लिखा है बताइए. The speed of this matter was around 90 words per minute. Okay, Devasmita 75, Nikita 70. Okay, Chahat also 70. All right, speed ज़्यादा थी क्या मैटर की? ऑल राइट, चलिए. सो आई होप आप लोग ऐसे मैटर्स रेगुलर बेसिस पे लिखा करो, ठीक है, बिकॉज इट रियली हेल्प्स टू इंक्रीज योर लेवल. ऑल राइट, लिखना स्टार्ट करा है लीगल और 3 मैटर्स
ही मेरे लीगल के का तो 70-75। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके ग्रेट, दैट्स अ स्टार्ट, दैट्स अ गुड थिंग। एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो किया, आप लोग आप लिख रहे हो इस मैटर को, ठीक है। सो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सो वी विल मीट अगेन गाइज टुमारो ऑन रेगुलर बेसिस इन आवर लाइव क्लास। स्पीड बैच की क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है, गूगल मीट पे जो होती है। एंड बाकी लोग मेक श्योर दैट आप लोग डिक्टेशन लगातार लिखते रहें, कहीं ना कहीं से देयर शुड नॉट बी अ वेरी बिग गैप इन योर डिक्टेशन टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। उसको लगातार आप लोग लिखते रहें, ठीक है। चलिए, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द लाइव क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट।